श्रोत्री जी को कि कृपया बताएं कि पद्मश्री उमाशंकर पांड्या जी ने ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं मैम, अभी ज्वाइन नहीं की। नहीं मैम, अभी ज्वाइन नहीं की। प्राचार्य महोदय ज्वाइन कर चुके हैं। वाघेला सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। आई सीन हिम। सभी पार्टिसिपेंट्स की सुविधा के लिए बताना चाहूंगी कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट और एक ऐसा मुद्दा बिल्कुल जो हमें कहना चाहिए, जो आज किताबी या बुकिश नहीं है। एक ऐसा मुद्दा जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं और जो हमें डे टू डे लाइफ में प्रभावित कर रहा है। सो हम इससे पहले हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक्चुअली हमारे आज I'll request participants to please mute themselves. आज हमारे जो इस व्याख्यान माला जिसको कहूंगी, इसमें जो हमारे अतिथि हैं आज हमारे साथ वो हैं श्री उमाशंकर पांडे जी। हमारे अतिथि हैं आज हमारे साथ वो हैं श्री उमाशंकर पांडे जी। आप पद्मश्री हैं। का मेड और मेड पर पेड़ इस स्लोगन के साथ वो अपना कार्य कर रहे हैं। इस स्लोगन के साथ उसके साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर डी के वाघेला जी, साइंटिस्ट हैं मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मध्य प्रदेश काम करने का 41 वर्षों का लंबा अनुभव। और इसी के साथ हमारे पास डॉक्टर ए सैमसन नेसराज जी भी सभी अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित कार्य कर रहे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट आज हम यहाँ सुनेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है ये आपको इस आज के दिन का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक अपने आप में ही हर चीज को प्रकट कर देता है, अपने आप में ही हर चीज को कह देता है। एंड दैट इज क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वन इज क्लीन एयर एंड अनदर इज ब्लू स्काइज। क्यों ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं? स्वच्छ हवा की नीले आकाश के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। जो चीज जिसको कहना चाहिए, जो चीज इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, जो बहुत ही एक ऐसा चीज जो बहुत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था, जिसके बारे में सोचना भी नहीं वायु के लिए सोचना भी नहीं। स्वच्छ वायु के लिए इस प्लैनेट पर हमें नैसर्गिक रूप से ये स्वच्छ वायु अवेलेबल थी। बट हमारी ही एक्टिविटीज से और आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि अब आज हम यहाँ तक वायु के बारे में सोचना हमें उस वायु के बारे में आज ये बात करनी पड़ रही है, हमें आज ये बात करनी पड़ रही है clean air for blue skies, and we must ensure clean air for blue skies. आज एक टू-फोल्ड प्रॉब्लम की बात हम यहाँ कर रहे हैं। आज का ये जो clean air for blue skies है, इसका जो थीम है that is together for clean. That means ये जो स्वच्छ वायु है, ये जो स्वच्छ हवा है, इसके लिए हमको साथ मिलकर कार्य करना होगा। अगर हम साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाए तो डेफिनेटली जो clean air और blue skies है, ये जैसे हमारी पंचतंत्र की कथाएं और कहानियां होती हैं। That once there was a time when there was air for blue skies, when the skies were blue and the air was इस टाइप से हमको बात करनी पड़ेगी। Once upon a time हमें लगाना पड़ेगा इन सभी। और शायद नैसर्गिक रूप से भोगने के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं। समय आ गया है कि
केवल अपने हेल्थ इम्पैक्ट की बात न सोचें, हेल्थ इम्पैक्ट तो है, हेल्थ इम्पैक्ट तो है ही, वो तो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं। इनविजिबल पार्टिकल्स हर बार सुनते हैं कि दिल्ली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स दिल्ली में और हर बार देश के कई शहरों में होती है। इतना स्मॉग होता है, इतना पोल्यूशन होता है कि इतनी बड़ी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दिल्ली में। और जब आप अपने सामने का जो दृश्य है जो दृश्य है एक फीट का भी देख नहीं पाते, वेरी ग्रिम सिचुएशन। इसके साथ ही हम देखते हैं इम्पैक्ट व्हिच इज क्लाइमेट इम्पैक्ट। जब हम क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट जो हमारा SDG 13 है वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। SDG 7 जो है SDG 7 जो है वो वाटर की बात करता है। और यहाँ पे बात कि किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेनमेंट के साथ हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण में पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी के लिए इस बार हम 4th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर हम 4th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे याद है 4 साल पहले जब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन मनाया था, तब डॉक्टर जो IIT चेन्नई से हैं वो हमारे बीच थे। प्रथम और इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर आज हम इस चौथे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इंटरनेशनल डे। ऐसा हुआ नहीं कि हम इस डे को मनाना बंद कर देते। शायद पर्यावरण सुधर जाता तो इस डे की आवश्यकता ही ना पड़ती, आज भी हम इसको मना रहे हैं। आज भी हम इसको मना रहे हैं। आज भी हम कुछ हमारे साइंटिस्ट को सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस which is being adopted by UN recognizing the need to substantially reduce the number of deaths from hazardous and to protect air pollution and contamination by 2030। आज ये बात की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अटेन के साथ 2030 तक हम क्लीन एयर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मनाते 2000 पर्यावरण को संरक्षित कर लेंगे। प्रिंसिपल सर हमारे बीच में हैं। अनुमति मांगूंगी सबसे पहले। प्राचार्य महोदय, क्या हम इस प्रोग्राम को ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हैं? प्राचार्य महोदय, क्या हम इस प्रोग्राम को ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हैं? जी नमस्ते मैम। जी सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को ऑफिशियली? मैडम सर ने ज्वाइन कर लिया और अभी में है आदरणीय पांडे सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो आदरणीय उमाशंकर जी पांडे सर। हेलो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शोचा मैडम प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखें। ओके मैडम। मैं देख रही हूँ कहाँ से होगा। मैडम मेरा हेलो मुझे मीटिंग में सर आप हैं मीटिंग हम आपको सुन पा रहे हैं। अनम्यूट नहीं हो पा रहा मेरे फोन से हैं। हमारे सर के फोन से। मयंक आप सर को अनम्यूट करिए। जी मैम। मैम ओके सर, आप अब देखिए। भारद्वाज सर नहीं हुआ मैडम अभी भी। चलिए कोई बात नहीं। पांडे सर जुड़ गए तो उनको फोन लगाता हूँ। जुड़ तो गए थे वो। मैं जुड़ गया हूँ। हेलो सर। हाँ सर नमस्कार सर। हाँ अर्पणा जी नमस्कार। कैसे हैं? क्या हाल है? सब ठीक है। प्रणाम करता हूँ सर। सभी मित्रों को प्रणाम। जी सर आपको सभी सर आवाज आ रही है थोड़ा पास। आज का आपने जो आपने जो कार्यक्रम रखा है बहुत सुंदर है और मैं सभी को बधाई देता हूँ।
नीले नीले आकाश को लेकर जो आपने बात कही है ये नितांत आवश्यक है और हमारे देश के लिए प्रदूषण मुक्त की जरूरत है। जो प्रदूषण है उसके विरुद्ध एक युद्ध की जरूरत है। और मेरा जैसा नारा और मेड़ पर जल जोड़ने के तरीके हैं, जो बेजोड़ तरीकों की जो जल संरक्षण की विधि है, आज भी कामयाब है। वो आज भी कामयाब है। आप देख सकते हैं पहल की एक हमारी सरकार की सहायता के आधार पर मैंने कोई एनजीओ बनाई, संस्था बनाई, कोई कार्यालय बनाया, न कोई ऑफिस खोला, लेकिन के साथ जोड़ करके एक हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा विषय लिया है और ये पूरी दुनिया के लिए प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध का अभियान है, सामुदायिक है, सबको मिलकर जो हमारे देश 140 करोड़ जनसंख्या है और 280 करोड़ हाथ जब एक साथ लगेंगे तो हम कामयाब होंगे। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, पेड़ लगाना समाज का काम है, समुदाय का काम है। हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे। आपका विद्यालय, आपकी टीम एक अच्छा काम कर रही है इस दिशा में। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करता हूँ। हम सबको मिलकर के भारत को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है और दुनिया प्रथम है। हम पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। दुनिया में कोई वैज्ञानिक आज तक बादल नहीं बना पाया, लेकिन हमारे पुरखे को जानते थे और काम करते थे। तो हमें परंपरागत विधि, नवीन विधियों को लेना है, दोनों विधियों को लेना है। मध्य प्रदेश को एक भाग्यशाली कहेंगे, हमारे भारत में 4 मध्य प्रदेश में हुए, जिनमें 4 मध्य प्रदेश में हुए। उनमें पहले जलयोधा देश के महाराज भागीरथ, दूसरे जलयोधा माता अनसुईया, तीसरे जलयोधा महाराज भोज, तीसरे जलयोधा महाराज बनाए, चौथे जलयोधा महारानी जिन्होंने दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना, पांचवी जलयोधा अहिल्याबाई होलकर। तो ये सब ने अच्छा काम किया है, प्रयास किया, हम सब मिलकर नीले आकाश फिर से तारे चमके, मुक्त आकाश रहे, स्वस्थ रहे, दुनिया संस्थित रहे। क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, दुनिया में पृथ्वी नीचे की ओर जा रही है, पृथ्वी नीचे की ओर जा रही है। मिलकर के सोचना होगा, हम सबको मिलकर के सोचना होगा। क्योंकि आज मैं कार्यक्रम था, मेरे यहाँ कमिश्नर साहब और सारे अधिकारीगण, तो एक चौपाल है और पेड़ की बात करेंगे। सब लोग मिलकर के समुदाय के आधार पर पूरी आपकी टीम को बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलकर के बात करेंगे। सर धन्यवाद सर। जी सर मेरे साथ है और अभिनंदन कर रहे हैं आपका और आपका बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्ततम समय में समय निकाला। मैं सदैव आपके काम के लिए साथ में हूँ और सदैव आपके साथ रहूंगा। विचारों से काम करना है। जी बहुत शुक्रिया सर जी। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच श्री उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी सुन रहे थे। पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, जिनका स्लोगन है पर मेड और मेड पर पेड़, एंड उनका ये स्लोगन He is basically a social worker for Uttar Pradesh, best known for his contributions towards groundwater conservation. जो सबसरफेस वाटर है उसके कंजर्वेशन के लिए जखनी विलेज में उन्हें जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में उन्हें जाना जाता है, परंतु वो जखनी से हैं और उन्हें पानी के पहरेदार कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। और उनका पूरे देश में उन्हें पानी का पहरेदार कहा जाता है। उनका जो मॉडल है वाटर हार्वेस्टिंग का, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया और उनके किसी कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए था, उन्हें प्रेस्टीजियस पद्मश्री अवार्ड से माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया 2023 में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जब उन्हें पद्मश्री अनाउंस किया गया और जब उन्हें दिया गया, उस समय उन्होंने उस अवार्ड के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, परंतु इस अवार्ड को मिलने के बाद वो सतत इस कार्य में लगे एंड वो जो बुंदेलखंड की बचपन में समझा उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो वाटर कंजर्वेशन के बारे में वो लाते चले जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत वेरी मच आभार आपका, बहुत आभार आपका इस मंच अनुग्रहित करने के लिए शोभा देने के लिए दी आज आपके शब्दों निश्चित ही इन शब्दों पर खरा करने का प्रयास महाविद्यालय करेगा। पूर्व में भी हम समर्पित रहे इन कॉजेस के लिए। पूर्व में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो क्लाइमेट 13 एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन को लेकर उस पर काम करते रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। इसके पश्चात आज अब हमारे और वैज्ञानिक हमारे बीच में डॉक्टर डी के वाघेला। आई थिंक वाघेला सर इज हियर। ओके, आई कैन सी दैट। नमस्कार सर, स्वागत है सर, आपका स्वागत है वर्चुअल मंच पर, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर डी के वाघेला जी इज अ सीनियर साइंटिस्ट and former regional lab head is MP pollution control board. He has 41 years experience in the field of environment and he has actively participated in the preparation of various action plans for various types of management, and he has been instrumental in preparing various action plans for polluted rivers, action plans for air pollution and noise pollution. He is presently working as an air technical advisor for catalyst for project of World Environmental Defense and USAID. And he has more than 25 research papers credentials which are in international and national research. He has several popular articles published in various newspapers and magazines. Center for Environmental Protection Research and Development has awarded Paryawaran Award on World Environment Day 2002. So he's such scientist and he's a person of I can say repute and very apt. आज सर आपका प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं और आपके जो कार्य का दायरा है शायद आज वो यूजफुल हम लोगों के लिए कि हम उससे कुछ सीख पाएंगे। आपका बहुत फ्लोर इज ऑल योर्स। शुरू कर सकते मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। यस सर। मयंक आप सर को पावर दे दीजिए। सर स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं। जी मैम। मैडम आपकी मयंक आपने पॉज डेलीगेट कर दी। अभी डिसेबल्ड आ रहा है। जी मैम कर दो। मैम कर दिया। ओके यस Yes sir, we can see that sir. Okay. सभी पार्टिसिपेंट्स अपना ऑडियो प्लीज बंद रखें so that हम ध्यान से सुन पाएंगे। कृपया अपना ऑडियो बंद रखिए।
सभी को मेरा नमस्कार। श्रद्धेय प्रिंसिपल साहब और उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि अभी भूमिका बताई गई है कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और ब्लू स्कीज मनाने जा रहे हैं। हालांकि यह दिन 7 सितंबर है, किंतु किन्हीं कारणों से हम आज मना रहे हैं। और देखा जाए तो कई जगहों पर अलग अलग दिवसों में इसको मनाया जा रहा है। अभी इंदौर में भी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से इस पर काम करना फिर से शुरू किया है, क्योंकि आप जानते हैं भारत का स्वच्छतम शहर है। लगातार 6 वर्षों से मैं आपको कहूंगी आप सबसे ज्यादा है। आप ऑफिस से साउंड वो करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हम लोग इंदौर में भी इस दिवस को कुछ दिनों से मना रहे हैं और 2-3 दिनों से हमने इस पे काम शुरू कर दिया है और लगातार हम काम कर रहे हैं। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ लगातार वायु प्रदूषण नियंत्रण पे भी काम होता है। इसलिए कि स्वच्छता के में हमने काम किया हटाया है शहर से और भारत के स्वच्छतम शहर के रूप में लगातार 6 वर्षों से सरताज बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही जब कचरे की सफाई हुई है, निश्चित रूप से वहाँ की वायु भी सुधरती है। तो हम विषय पर आते हैं। जैसा कि बताया गया है कि 2020 से हम लोग दिवस मनाना शुरू कर चुके हैं और 22 जनवरी 2020 में सबसे पहले निर्णय हुआ था कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और ब्लू स्कीज मनाया जाए, क्योंकि आवश्यकता इस बात की कोविड-19 आया था। उसके बाद हमने देखा है कई जगह पर हमें यह नजारा देखने मिला। वह समय बहुत ही नकारात्मक समय था और उस नकारात्मक दौर में हमने आकाश को एक नीले गगन के रूप में देखा और दूर तक हमें स्वच्छ दिखाई देने लगा। इंदौर से हम हमारे ट्रेन से देवास की पहाड़ियों तक देखा है, यानी करीब 35 किलोमीटर दूर तक का हमें साफ दिखाई देता था। जब ट्रेन से हमें देवास की टेकरी दिखाई देती थी। और इस तरह से हमने कई जगहों पर ये देखा है कि काफी आकाश साफ होने के कारण विजिबिलिटी बहुत क्लियर हमें नीले गगन के बहुत एक दृश्य मिला था। हालांकि धरती पर बहुत दृश्य भी था, बहुत खतरनाक था कि हम कोविड-19 में जी रहे थे, जब हमारे कई हमारे आस-पास चले गए थे। पर सुखद पहलू हर चीज में दोनों पहलू होते हैं। तो हमने इस पहलू को आगे बढ़ाए रखने के लिए दिवस पूरे विश्व में मनाना जो हुआ था उसका हमें करना चाहिए। और हमें भारत में हम देखें कि यहाँ धूल की समस्या बहुत रहती है, तो हमारे यहाँ अधिकतर हमें नीला आकाश बहुत कम समय देखने मिलता है, जैसे बारिश के दिनों में ज्यादातर हमें आकाश दिखाई देता है, यहाँ में विजिबिलिटी बहुत कम होती है। और बड़े शहरों की बात करें जैसे इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहर हैं जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, वाहनों की संख्या भी बहुत है। तो यहाँ ऐसे नीले गगन के दर्शन बहुत मुश्किल होते हैं। तो ऐसे समय हमें इस पर काम करना बहुत ही सामयिक लगता है और बहुत आवश्यक लगता है। हम देखें कि इस दिवस को मनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें है कि हमें इंस्पायरिंग एक्शन होना चाहिए, जिससे हमें इन बातों को ज्यादा प्रचार किया जाना चाहिए कि हमें स्वच्छ वायु रखने के लिए क्या काम करना है, हमारे नियमों को कैसे कठोरतम बनाया जाए, कैसे सख्ती से लागू किया जाए, उस पर भी सोचना आवश्यक है। हमें क्लाइमेट पॉल्यूशन के बारे में भी सोचना है कि हमें किस तरह से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कुछ वर्ष पहले जो BS4 चलता था, तब BS4 वाहनों का भी मॉडल होता था और हमारा जो फ्यूल होता था वह भी BS4 होता था, भारत स्टेज 4। किंतु हमने तुरंत उसको BS6 में कन्वर्ट किया, हम BS5 पर नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेस स्लो होती है। जबकि हम भारत के अलावा शहरों में देखें, दूसरे कंट्रीज में देखें, तो वहाँ पर
डेवलपमेंट हो रहा है, कई जगह डेवलपमेंट हो रहा है, कई जगह 10 लेवल तक के 10 लेवल तक के स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं। हम ये 6 में आ गए हैं, ये 6 में आ गए हैं, बहुत बड़ा, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रदूषण भी बहुत घटा है, प्रदूषण भी बहुत घटा है, हमारे वाहनों की एफिशिएंसी महंगे जरूर हुए हैं वाहन, महंगे जरूर हुए हैं वाहन, किंतु हमें जो और जो नुकसान प्रदूषण से होता था, प्रदूषण से हम काफी बच रहे हैं, उससे हम काफी बच रहे हैं। इसके अलावा हमें इमिशन वेस्ट से प्रोसेसिंग से रोकना है, मिनिमाइजेशन करना है, मॉनिटरिंग बढ़ाना है, और वाहन प्रदूषण पोल्यूटेंट्स को भी रिड्यूस करना है, इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाना है, जिसे हमने बढ़ाया है, व्हीकल्स को बढ़ाया है। इस तरह से हमें ऐसी एक्टिविटीज जिससे हमें किसी भी तरह से हम कम कर सके, नियंत्रित कर सके। इस साल की जो दी गई है वो है गैदर फॉर क्लीन एयर। हम सब साथ मिलकर ही क्लीन एयर को साफ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वायु पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। चाहे हम प्रदूषण इंदौर वाले कर रहे हो, उसका प्रभाव देवास में भी हो सकता है, उज्जैन में भी हो सकता है, सीतापुर में हो सकता है, और धार जिले में हो सकता है। इसी प्रकार यदि उज्जैन देवास का प्रदूषण होगा तो उससे इंदौर वाले भी प्रभावित हो सकते हैं। या भारत का प्रदूषण होगा तो हमारे पड़ोसी देश उससे प्रभावित हो सकते हैं, या पड़ोस देशों में प्रदूषण है तो भारत भी इफेक्ट होगा। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमको साथ जुड़े रहना बहुत आवश्यक होता है। हम देखें कि जो एयर पोल्यूशन है उससे इंडोर हो या आउटडोर पोल्यूशन हो, सभी तरह से इतना ज्यादा खतरा पैदा हो गया है कि कहा जाता है कि 10 मिलियन डेथ पर ईयर सिर्फ एयर पोल्यूशन से हो रही है। हम देखें डेफिनेटली उसके कारण ये प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं, बट इवन देन हम आपको सुन पाए और हम अच्छी तरह से आपको सुन पाए सर, हम अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था आज के लिए। उज्जैन के पर्सपेक्टिव में आपने जो बात की कि अगरबत्ती का जलाना कम किया जाए, और इससे जो पोल्यूशन हो रहा है, और जितना अगरबत्ती हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बीइंग एक धार्मिक नगर होने के कारण यहाँ पे ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। RRR सेंटर्स, आप जैसा कि हर एक शहर में आजकल, इंदौर में भी, उज्जैन में भी, सब जगह हम देखते हैं दैट RRR सेंटर्स आर देयर। जगह जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको एडवर्टाइज भी कर रही है कि आपके पास में कोई भी अनवांटेड कपड़ा, कोई भी अनुपयोगी सामग्री है तो आप RRR सेंटर्स पे दीजिए। हमें आज के दिन हमारे छात्रों को और हमको, हमारे विद्यार्थियों को जो इसमें जुड़े हुए हैं, फैकल्टीज, हमको ये जरूर ये शपथ आज लेनी चाहिए कि कोई भी अनुपयोगी सामग्री हमारे पास होगी तो उसे हम इन RRR सेंटर्स तक जरूर पहुंचाएंगे। कम से कम हमारा यही एक आहुति इस यज्ञ में हो, जो शासन प्रशासन के द्वारा ये जो क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज हम मना रहे हैं, ये केवल रिचुअल्स ना हो जाएं, बल्कि इसके साथ में सच में हम कुछ हासिल कर पाए, और शायद आने वाले 4 सालों में इनकी आवश्यकता ही ना पड़े। क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की जगह देयर इज अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, हम ऐसा कह पाए। एंड इंस्टेड कि हम इसे एक वार्निंग की तरह मना रहे हैं, इसकी जगह हम इसे सेलिब्रेट करें दैट यस वी हैव क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज एंड लेट अस सेलिब्रेट इट। इसी भावना के साथ सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना समय इतने ये जो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस थे उसके बीच में हमको दिए। आज मौसम भी खराब हो रहा है, उज्जैन में खराब है, इंदौर में भी खराब ही होगा, उसी के कारण शायद ये प्रॉब्लम्स हो रही। इसके साथ ही आज हमारे जो नेक्स्ट, नमस्कार, नमस्ते सर, इसके साथ ही हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो श्री सैमसन नसराज जी हैं, डॉक्टर ए सैमसन नसराज जी। He doesn't know Hindi. He doesn't know Hindi. Yeah, that is. No sir, I'm just saying that is he there? Mayank, Mayank आप चेक करके बता दें, डॉक्टर ए सैमसन नसराज, इज ही देयर? ओके मैम, प्लीज बैठ। Yes, ma'am, join. Okay, thank you, Mayank. So our next guest and scientist today is Dr. A. Samson Nasraj. Dr. Nasraj. Yes, ma'am.
Yes, sir. Okay, sir. So we are starting. So Dr. A. Samson Nasraj has more than 25 years of research, academic as well as administrative experience in his career. He completed his doctorate degree in chemistry from Central Electrochemical Research Institute, CECRI, in October 2002. Presently, he is working as a professor in chemistry and director student affairs in Kalasalingam Academy of Research and Education. Please pardon me if I am wrongly pronunciating the names. And this is a deemed to be university in Tamil Nadu. He is a well-known scientist in the field of material chemistry in India. So far, under his guidance, 10 students have completed their PhD degree in chemistry. Further, 7 more students are currently working for their PhD degree under his guidance in different areas of material chemistry. He has published more than 100 research papers in peer-reviewed national and international journals. Apart from this, he has 3 Indian patents which are granted to him to his credit in the field of material chemistry. Further, he completed a research project on solid oxide fuel cells with a project grant of rupees 28 lakhs, which is sponsored by Ministry of Power, Government of India in year 2022. So we welcome you, sir, on this day of clean air for blue skies. We have already, today we are actually having bad weather here in Ujjain, Indore. So actually, we are experiencing electric power cuts and internet losses are also there. So we will be able to hear to you nicely. We expect that. So welcome, sir. Welcome, ma'am. Yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you. Mayank, please give sir co-host powers. Yeah. Just a minute, ma'am. Madam, can I share it, ma'am? Yes, sir. Mayank, have you given just a minute? Yes, sir. Okay, sir. Yeah. I'll check it, ma'am. Just a minute, ma'am. Madam, whether the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Yeah. Shall I start, ma'am? Yes, sir. Yes. Thank you, ma'am. So, good evening, all of you. First of all, I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to give my talk in this International Day of Clean Air for Blue Skies. So, I would like to thank the principal of government. Yeah. So I would like, madam, I got certain disturbances. Okay. Madam, I got certain disturbances, ma'am. सर वीडियो की आवाज कंप्लीट नहीं आ रही। सर I got certain disturbances. की आवाज अच्छी नहीं आ रही। Hello. Sir, shall I close it, sir? Shall I join again? No, sir, you are perfectly fine. There may be problems on participant end. So please go ahead, sir. Okay, ma'am. I'll start, ma'am. Yeah, just a minute. So, sorry for the disturbance. Good evening, all of you. Once again, I thank the organizers for giving me an opportunity to
for giving me an opportunity to give my talk in this forum in the International Day of Clean Air for Blue Skies. I would like to thank the principal as well as the HOD of Chemistry, Government Mada Science College, Ujjain, as well as I would like to thank Madam for giving me an opportunity. So now I'll start the presentation. So first we need to understand about the environment. What is environment? Environment is nothing but sum total of all the living, non-living elements and the effects that influence human life. This is called environment. Now we'll see about the top environmental issues in the world now. So today I'm going to give an elaborative explanation about air pollution. As you know, air pollution is nothing but the release of harmful solid and gases into air. So this is called as air pollution. Today I'm going to give a brief discussion about this to all of you. So when you talk about air pollution, we have to understand about the different types of air pollution. The air pollution can be classified into two sections. First one is invisible and visible air pollution. Visible air pollution, as the name suggests, can be visible. The smog you see over the city is an example of visible pollution. So you can able to see the diagram on the right hand side, top diagram, in which you can able to see the air pollution which is visible. Second one is invisible air pollution, which are less noticeable, but they can be more deadly. Good examples of invisible air pollutants are sulfur dioxide, carbon monoxide, and nitrogen oxides. These are all the gases which are responsible for invisible air pollutants. So now the air pollutants, just a minute. It can be further divided into primary and secondary air pollutants. If you go deep, if you see the diagram, you can be able to understand about the primary pollutants as well as secondary pollutants. So primary air pollutants can be caused by primary sources or secondary sources. The pollutants that are a direct result of a process can be called primary pollutants. A classic example of a primary pollutant would be the sulfur dioxide emitted from factories. So you can be able to see the gaseous substances that are reaching the sky from the factories that are mainly due to these primary air pollutants. Now we'll see about the secondary air pollutants. So they are the ones that are caused by the intermingling and reactions of primary pollutants. Actually, you can able to see the secondary pollutants are directly coming from the primary pollutant. They are responsible for because of the primary pollutants. Smoke created by the interactions of several primary pollutants is known as a secondary pollutant. You can able to see sulfur dioxide is a primary pollutant, carbon monoxide, carbon dioxide is a primary pollutant. Similarly, NO and NO2, they are all primary pollutants. So when you see the secondary pollutants, so from sulfur dioxide, we can get sulfur trioxide, and we can get nitric acid from nitrogen gases, nitrogen oxide, nitrous oxide gases, then sulfuric acid from SO2. So like that. So we'll be getting the pollutants, okay, from the primary pollutants. They are called as secondary pollutants. Now we'll see top 10 kinds of air pollutants. So they are generally classified in this particular category. So sulfur dioxide is the primary one. Then we have carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, volatile organic compounds. We are calling these as VOCs. Particulate matter are simply called as PM, ground level ozone, chlorofluorocarbons, CFCs, unburned hydrocarbons, lead and heavy metals. So they are all generally called as common air pollutants. Okay, the more severe air pollutants are given in this diagram. So you can able to see carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, volatile organic compounds, particulate matter. These are all the common air pollutants which pollute the air in a severe manner. So sources of outdoor air pollution.
So air pollution can be classified into two different types, outdoor as well as indoor. Outdoor air pollution may be due to power plants, construction and road dust, emissions from the vehicles, biomass burning. Then industries, they can release unwanted gases into the atmospheric air, open waste burning, transportation, brick kilns. So these are some of the examples of outdoor air pollution. Similarly, we have different types of indoor air pollution. We can able to see the diagram here, cigarette smoking, dust, mosquito repellent, we may use it in our houses, so which may also cause air pollution. Wall and furniture painting, agarbatti, and wood and paper burning outside air, as well as cooking. Okay, cooking using woods. So they also contribute air pollution. So these are all some of the indoor air pollutions which will also pollute the atmospheric air heavily. So now we'll see the different causes of air pollution. I'm going to explain about different causes of air pollution, and after that we are going to see about the sources of air pollution, and finally we are going to see what will be the cause, what will be the problems that the environment is facing because of air pollution, and finally we'll touch about how to control the air pollution. So these are topics I would like to briefly cover today. So the first one is the burning of fossil fuels. This is a major reason for air pollution. So sulfur dioxide emitted from the combustion of fossil fuels like coal, petroleum for energy in power plants, and other factory combustibles is one of the major cause of air pollution. As you know, billions of vehicles run on roads are powered by gasoline and diesel engines that burn petroleum for releasing energy. As a result, such as we can say particulate matter, nitric oxide, then NO2, which can called as NOx, carbon monoxide, organic compounds, and lead emit from vehicles, causing a high level of pollution. So this is the main reason for air pollution, burning of fossil fuels. So burning of fossil fuels that may be resulted from petroleum industries, as well as which may also because of the vehicles which run off gasoline as well as diesel engines. Secondly, agriculture activities. So you can able to see these diagrams on the right hand side. So ammonia is a very common byproduct of agriculture related activities and is one of the most hazardous gases in the atmosphere. The use of insecticides, pesticides, and fertilizers in agriculture activities has grown quite a lot. So in our life, in our time also, we could find the villagers or the agriculture use pesticides, insecticides in the fields. So which will also cause pollution, especially in the formation of ammonia gas, and which is a very dangerous pollutant which may release into the atmospheric air. They emit harmful chemicals into air and can also cause water pollution. So ammonia present water also will be a problem. Ammonia that can reach in the atmospheric air and which will cause unnecessary problems in the environment. Thirdly, waste in landfills. As you know, in cities, you could find the landfills. The landfills are areas in which waste is deposited or buried. Sometimes in landfills, the unwanted waste that will be thrown out. These deposited or buried waste generate methane. You know, methane is a major greenhouse gas that is highly flammable and very hazardous. So we need to be very careful with this activity. Mostly in municipalities and corporations, they used to throw all the waste material in the outside of the city. So there methane gas may be evolved and which will create unnecessary problems. So this is also a major cause of air pollution. Next one is exhaust from factories and industries. So we could find a lot of industries now because of the urbanization. A lot of industries are coming up. Of course, industries are giving good job opportunities for the youth, as well as which will release a lot of unwanted gases into the atmospheric air. So if you see the diagrams, you could be able to see carbon monoxide gas, hydrocarbons, organic compounds, and chemicals
which may come out from the industries, thereby depleting the quality of air. The quality of air is completely decreased nowadays because of these unwanted gases that are present in the atmospheric air. Manufacturing industries can be found at every corner of the earth, and there is no area that has not been affected by it. Petroleum refineries, you can able to see the diagram. So also release hydrocarbons and various other chemicals that pollute the air and also cause land pollution. So this is the fourth important cause for air pollution. Now, fifth one is mining operations. Of course, mining operations that are not there in all the places, but places in which mining work is going on, okay, you can able to find out this pollution, air pollution. Mining is a process wherein minerals below the air are extracted and using large equipment. During the process, dust and chemicals are released in the air, causing massive air pollution. This is one of the reasons which is responsible for deteriorating health conditions of workers and nearby residents. So probably the people who are working in the mining industries may have a lot of breathing problems, asthma problems, and all the problems they have because of the pollutants that are released during the mining operation. Next one is indoor air pollution. Household cleaning products, painting supplies emit toxic chemicals in the air and cause air pollution. Have you ever noticed that once you paint the walls of your house, it creates some sort of smell that makes it literally impossible for you to breathe, isn't it? So when the painting is done in the walls, and a lot of unwanted organics that may come out and which may hinder the health of our people. Suspended particulate matter, popular by its acronym SPM, is another cause of pollution, referring to the particles afloat in the air. SPM is usually caused by dust, combustion, etc. You could be able to find out the reasons because of this painting, as well as during cleaning the products, a lot of unwanted impurities that may reach the atmospheric air and which will create air pollution. Next one is natural events. There are certain natural events such as volcanoes, forest fires, and dust storms, which are nature-born and cause air pollution. So this is also a very important reason, especially in countries like in Asian countries. In few countries, they have this problem, natural events. Okay, sometimes they may face these volcanoes as well as forest fires. Sometimes dust storms also may pollute the atmospheric air. So because of this, the people as well as the animals, the birds, will undergo a lot of health issues. Okay, now we'll see some of the disastrous effects of air pollution. Now just now I told you about the different causes of air pollution. We have seen different causes. Now we'll see what are the different effects of air pollution. Number one, respiratory and heart problems. So effects of air pollution are alarming. They are known to create several respiratory and heart conditions like asthma, chronic bronchitis, then emphysema, heart attacks, and strokes, along with cancer, among other threats to the body. Several million are known to have died due to the direct or indirect effects of air pollution. This is a very important problem, health issue. Because of air pollution, the main organ which is affected is our lungs. So lungs will undergo this particular problem because of the problem in the lungs, and the people may have asthma problem, and which will lead to a lot of other health issues. For example, heart attacks, strokes, and other things, which will lead to cancer also sometimes. So these are the heavy health issues faced by the humans. So that means we have to reduce the air pollution, by which we can control these problems which are presently available in human beings. Number two, child health problems. Air pollution is detrimental to your health even before you take your first breath. Exposure to high air pollution levels during pregnancy causes miscarriages, as well as premature birth, autism, asthma, and spectrum disorder in young children. So the young children
they face lot of issues because of this air pollution. In some cities, they are not able to move to the school, and they are not able to come. They are not able to reach their home safely because of this air pollution. Especially in the cities like Delhi, lot of air pollution affects the children who go to school and who come from the school. Also has the potential to damage early brain development in a child and cause pneumonia that kills almost 1 million children below 5 years every year across the world. So as children also face lot of health issues because of air pollution. Number 3, global warming. It's a very big issue now, and people talk about this in all the countries. Now the countries are taking initiation to control global warming. Because of the air pollution, now the entire world is facing this particular problem. So what is global warming? So which is a direct effect of this air pollution. Okay, and with increased temperatures worldwide and increase in sea levels and melting of ice from cold regions and icebergs displacement and loss of habitat have already signaled an impending disaster if actions for preservation and normalization are not undertaken soon. So now, because of this air pollution, the temperature of the world, the temperature of the Earth is enhancing. Because of that, what happened? Ice, okay, melts, especially in the regions of Antarctica. Because of that, the the water after because of the melting of ice and the water level in the sea is increasing. Because of that, what happened, and it creates unnecessary problems for the wild animals, especially the animals which are surviving in the cold region, and it leads to a lot of problems in the environment. Global warming is a very big issue because of the air pollution. Next one is acid rain. So now you know about the harmful gases that are being released every day, okay, from the industries as well as from the vehicles. Harmful gases like nitrogen oxides and sulfur oxides are released into the atmosphere during the burning of fossil fuels. When it rains, the water droplets combine with these air pollutants becoming acidic and then falling on the air in the form of acid rain. You know, if you see this diagram, you can able to see from the industries, nitrogen oxides, sulfur dioxides that are reaching the atmospheric air. When rain comes, what happens? Water molecule which can undergo reaction with this nitrogen oxides and sulfur dioxides, and it falls in the air as acid. Okay, nitric acid and sulfuric acid, that both acids, sometimes carbon monoxide and carbon dioxide can join with the water, and which can form as carbonic acid too. So these acids enter the air, and which causes a lot of problems. Acid rain can cause great damage to humans, animals, and crops. You can able to see the the photograph of Taj Mahal before and after effects of acid rain. Before acid rain, the beauty of Taj Mahal was really great, and after the acid rain, you can able to see the removal of certain important paintings from the surface of the Taj Mahal, and the beauty is declining like that. And the humans, they may undergo a lot of health issues because of the acid rain, and animals as well as crops also, they may face these problems. Next one is eutrophication. Eutrophication is also a very big problem now. Eutrophication is a condition where a high amount of nitrogen present in some pollutants gets developed on the sea surface and turns itself into algae and adversely affects fish, plants, and animal species. So you can able to see the diagram here. If you see the diagram, the surface of the water is covered with some algae. You can see the green colored algae which formed over the surface of the water. What is the main reason? Because of the high level of nitrogen content present in the water, especially in the surface water actually, or in the sea water. You can able to see, because of the presence of this algae in the surface of the water, and what happened, the amount of oxygen that is required for the animal to survive in the sea as well as in the water regions, okay, which will decline. So because of what happened, animals may die. So sea animals may die. You can able to see the
dead fish that is present in the surface of the water. The green colored algae that are present on lakes and ponds are due to the presence of this chemical only. Because of the high level of nitrogen content, and all these problems are resulted this eutrophication, the booming of algae in the water level, which is present. Now, effect on wildlife. So, air pollution also causes a lot of problems in the animals. Just like humans, animals also face some devastating effects of air pollution. Toxic chemicals present in the air can force wildlife species to move to a new place and change their habitat. You can able to see the movement of deers moving from one place to other place because of the toxic chemicals that are present in the air. The toxic pollution deposits to the surface of the water and can also affect the sea animals too. So the animals, the birds, and other living creatures also face a lot of problems because of this air pollution, because of the polluted air. Now, this seventh one is a very important disastrous effect, that is depletion of the ozone layer. So ozone exists in the Earth's atmosphere, Earth's stratosphere, and is responsible for protecting humans from harmful ultraviolet rays. So ozone layer is very important, because if ozone layer is not there, means and will be facing a lot of issues, health issues. So if you see this diagram in the right hand side, the ozone layer depletion, you can able to find out. Yes, ozone layer is depleting due to the presence of chlorofluorocarbons, which is otherwise called CFCs, as well as hydrochlorofluorocarbons in the atmospheric air. So the CFCs and HCFCs are responsible for the depletion of ozone layer in this atmospheric layer, actually in the stratosphere. So because of the holes that are formed in the surface of the ozone layer, what happened? The light that can directly reach us, and which will cause unnecessary problems. As the ozone layer becomes thin, it will emit harmful rays back on the earth and cause skin and eye-related problems. UV rays also have the capability to affect crops. So this particular problem is growing very fast in certain countries. So that's why countries are taking immediate steps to control the air pollution. So now, how to? There are certain impressive solutions to air pollution. So how to avoid this air pollution? So just I would like to give certain ideas, and which may be useful for us. Number one, use the public mode transport as well as electric vehicles. So this is a very important solution for controlling air pollution. So we need to encourage people to use more and more public modes of transportation to reduce pollution. Also, try to make use of carpooling. So this is also a very important aspect. If you and your colleagues come from the same locality and have the same timings, you can explore this option to save energy and money. So by means of traveling through public mode of transportation, of course, we can control the removal of unwanted gases from the vehicles, and to some extent the air pollution can be controlled. Number two is electric vehicles can be used. Electric vehicles are booming up nowadays. EVs can run through electricity, and if you see about EVs are completely environment friendly. They will not emit any kind of pollutant gases when they operate. So we can promote EVs also. By promoting EVs, that is electric vehicles, we can control air pollution. Number two, better household practices. So in most of the villages, people use woods for the cooking purpose. Actually discard fireplaces and or wooden stoves used for heating homes. Use gas logs in place of wood. Also eliminate the use of gas-powered lawn and gardening equipment. So we can avoid wood stoves, so which will control air pollution to some extent. Avoid setting fire to garbage, dry leaves, or other materials in your yard, and lighting bonfires in the open. So you can able to see sometimes the garbages and other dry leaves used to be fired by the villages, so which can be avoided, so that unwanted gases may not reach the atmospheric air, which may not
pollute the atmospheric air. Number 3, so conserve energy. So energy can be conserved because in most of the places, electricity is produced because of the burning of fossil fuels. So we can switch off the fans and lights when we are not using it. A large number of fossil fuels are burned to produce electricity. So we can save the environment from degradation by reducing the number of fossil fuels to be burned. This is also an important aspect by which we can able to control air pollution. Number 4, understand the concept of reduce, reuse, and recycle. So triple R's concept is very important. So as students, as faculty members, we can also give awareness among the people about this triple R concept. So which is a very important concept, which will definitely help us to come out from air pollution. Do not throw away items that are no use to you. Instead, reuse them for some other purpose. For example, you can use old jars to store cereals and pulses. So this reduce and reuse and recycle concept is a very important concept by which we can control air pollution. Number 5, emphasis on clean energy resources. Of course, we know about the clean energy resources. Use of clean energy technologies like solar, wind, and geothermal is on the rise nowadays, and our government is also supporting a lot of research projects on solar related works. So we need to depend on clean energy technologies nowadays. So governments of various countries have been providing grants to consumers who are interested in installing solar panels. Of course, in India also, in certain governments, they are giving subsidies for installing solar panels in their homes. Undoubtedly, this can go a long way to curb air pollution. So air pollution can be controlled at a greater level when you go into this alternate energy technology, for example, solar power or wind power or geothermal based power. Number 6, use energy efficient devices. So we can go for energy efficient devices. For example, CFL lights consume less electricity than their counterparts. So then they live longer, consume less electricity, lead to lower electricity bills, and also help you to reduce pollution by consuming less energy. Several attempts are being made worldwide on personal, industrial, and governmental levels to curb the intensity at which air pollution is rising and regain a balance so far as the proportions of the foundation gases are concerned. So always we need to promote the devices which are being used now, especially energy efficient devices like CFL lights can be used, and which will definitely reduce the electricity level. So if you reduce the electricity level, definitely the amount of other fossil fuels that are used for the generation of electricity can be reduced, and so that we can control air pollution. Okay, so how can we adopt this technique? So how can we adopt this technology in our day-to-day activities? So our responsibility to go for green technology aspects, because if you adopt green technology aspect, definitely we can control the pollution, especially the air pollution can be controlled, and we need to take a certain responsibility to follow these green technological principles. Number 1, do not waste electricity, switch off electrical equipment when not required. Avoid electrical equipment consuming more power. So we can avoid the equipments which are consuming a lot of powers can be avoided. Number 2, don't waste water. Never leave taps open while brushing or washing dishes. So we can save water. Number 4, don't waste fuel. So fuel need not be wasted. Number 4, don't waste food. Don't cook extra food and throw. Always keep in mind that there are millions in the world starving without food. So always try to practice these green technology principles in our life. So we need to work on the controlling of air pollution in the present generation, because now the air pollution is going to the greater level. So we need to control, as students, as faculty members, we need to take right steps to control air pollution. So definitely, which will help the
the humankind to go further or to move further in their career. So thank you very much for the time. I would like to thank organizers for giving me an opportunity to talk about the air pollution in this auspicious day. So if you have any clarification, you can ask so that I can clarify the doubts. Thank you very much. Hello, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Yes, ma'am. It's a time for clarification of doubts. Yeah, ma'am. Yes. yeah. If somebody wants to ask any question, thank you very much, sir. Yes. You just explained very nicely about that, what are the causes of air pollution, Yes. and how it can be mitigated. That is very important, that what we can do for the mitigation of the different types of air pollution and how we can play our role. So it was very nice. It was an outstanding lecture. Thank you, sir. If any Yes. student or faculty wants to ask any question, you can just let me know, and just switch on your audio and video and you can ask the question. Just giving you 5 minutes. Or should I think that no questions are, you have understood everything and you have pledged not to indulge in air pollution, and so that we can move ahead? So, okay, thank you very much, sir. And now Yes. I'll invite Principal of the college, Professor Arpan Bharadwaj. Sir, can you hear me? Yeah, I could hear me. I can hear you, ma'am. Just. I'm asking Professor Bharadwaj. Professor Arpan Bharadwaj ji, can I hear you, Principal sir? Mayank, Principal sir is here. Mayank Kshatriya ji, can you just... Okay, ma'am. Yes, ma'am. Sir is there. Yes. So just switch on his audio so that I can request for the concluding remarks. Principal sir, can you hear me? Yes, sir. Sir, I request you for your concluding remarks. So you please come here. नमस्कार। आज जो वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया उसमें जो स्पीकर्स थे पद्मश्री डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब, उनकी बहुत व्यस्तता थी, फिर भी उन्होंने उस व्यस्त समय में से अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों के साथ वो उपस्थित हुए। दूसरे इंदौर से जो साइंटिस्ट महोदय थे वो, और तीसरे प्रोफेसर नेसराज साहब, मैं आपको सुन रहा था सब बहुत ध्यान से, और आपने बहुत ही, इट वाज रियली वंडरफुल टू लिसन ऑल द थिंग्स दो वी नो बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल दोस थिंग्स. So the 3R concept or the everything which you were sharing, this is all new to, we all know all those things, but it is again and again required to be instructed, and for the student society basically. This day, clean air for blue skies, it becomes very important, and you all of you have given your valuable time for this event today to make this event successful. So everything which was shared, जैसा हमारे उमाशंकर पांडे साहब ने भी कहा कि खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, तो पेड़ जो है वो हम लोग जानते हैं कि the trees are the sources to clean air, they are the only sources to clean air, natural sources to clean air. Then इंदौर को जिस प्रकार से एक मुकाम हासिल हुआ है स्वच्छता को लेकर के, और स्वच्छ हवा के क्षेत्र में भी वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा हम आज जान पाए। और नेसराज साहब ने जिस प्रकार से हम लोगों को जानकारी दी, मैं समझता हूं कि ये आज फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब पे भी वी लॉन्च ऑल दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो,
we have a YouTube channel, and we try to share it with maximum students, and so that the community is benefited. So it was really very wonderful to listen to all of you, and you have spared your valuable time for us. So I thank you all, and I invite you all to come to Ujjain, because this is now a new place, and new in the sense that now Ujjain has become a new. It's in a new look. So everybody who is coming to Ujjain, and nowadays we are reading in the newspaper that in 1 month we had 2 crore people who visited in 1 month. It was more than a Sihast crowd. So I invite you all to come to Ujjain, and we'll be very happy to have you with us. So I thank you all for sparing your valuable time with us. Thank you all. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much, sir. Thank you for your valuable concluding remarks. And now I would invite Professor Brajesh Parekh to just convey his official vote of thanks. However, vote of thanks is a thing which is related to the expressions. So I would just request Parekh sir to please go ahead with official vote of thanks. Thank you, Professor Kalpana Singh. It has been really wonderful, and right from Pandeyji, who are really very busy, but he spared few moments for us. Very important time he has given to us. So I'm really, on behalf of the Department of Chemistry and on behalf of the Mother Science College, I'm very thankful to him. Mr. Vaghela, Dr. Vaghela, who has really air scientist, I will call him the air quality scientist, and we are very, very happy to have him with us today, and he spoke very nicely, and we're looking forward to have more interactions with Dr. Vaghela. The third speaker, Samson, thank you so much, sir. And when I spoke to Professor Swaminathan from Chidambaram, he's my very senior and very good friend, that we are looking for some good scientists, to speak on air quality. He suggested your name, and I'm very thankful to Professor Swaminathan also, and to you also. And this is just a beginning, and we are looking forward to have many more such interactions in the years to come. Thank you very much to all three esteemed speakers. So nice of you on behalf of the speakers and all the speakers and all the participants for your patient hearing. Thank you. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much, Parekh sir, for extending this official vote of thanks in very precious words. He is our HOD, head of the department chemistry, and he himself is an ardent chemist working on many environmental issues and problems with dyes and all that. So today was an important day, and actually this will be most important, and this will be fruitful when we'll just apply the concerns and we'll apply the remedies which were raised by Dr. Samson Nasraj, and when we will address the concerns which are raised by Dr. Vaghela and Padma Shri Umashankar Pandeyji, that whatever I was saying, that for the next time we should not organize this event with a warning, but we should celebrate this day, that we have just achieved, and we have we are having clean air for blue skies. Our skies are blue, our air is very clean. So we'll celebrate this by just applying all the concerns, by addressing all the concerns, and by applying all the remedies which were given. So thank you very much, sir. Thank you very much, speakers. Thank you very much, participants, for being here. There is a feedback form for all you participants. Please just fill this feedback form, and this feedback form will be shared in this chat only. Mr. Mayank Shotri, I would request you to share feedback form. I have forwarded you that feedback form. Please share the form over here. Thank you very much, sir. Thank you very much for giving your time. Thank you very much for just
helping us organize this event so nicely with you. Thank you, sir. Participants can leave only after filling the feedback form. Just copy the feedback link in your browser and then you can leave. Thank you, sir. Okay, so thank you. This Google form has been shared by Mayank in this link. Please copy the Google form. Please copy this link in your browser. Fill the form so that certificates can be given to you. Thank you very much. You have to write just a simple paragraph about the program. That's all. Thank you very much. Thank you very much, sir, for joining us once again. And now you can leave the session. Thank you, sir. Participants can also leave if you have. Thank you, sir. With this, we are just winding up. Thank you all.